Hi guys, welcome to GN IELTS Prep. So today we'll be discussing another cue card. Describe something that was broken in your home and then repaired. Sub questions are what is it, how it broke, how you got it repaired, and how you felt about it. So we will take up each of this question by following the format that we had earlier studied. Yeah, so a brief introduction about myself. My name is Ritu. I have pursued dentistry and I've myself appeared for this IELTS exam twice and I managed to score more than 8777. So my result is being displayed over here. We are conducting full-time classes of IELTS at Surat. So there are certain highlights about our classes that I'd like to focus on. We give personalized attention. There is a minimum batch size that I always take in. One-on-one interaction with each of the students. There will be everyday speaking practice. Writing evaluation is done in person so that the student gets to know what the mistakes are. Tips and tricks are given for listening and reading, and grammar concepts are made very, very easy for you guys. So let's begin with sub questions. And in the first part is introduction. So here it is a cue card which is talking about repair. So I've chosen the opening line as maintenance is a part and parcel of life as wear and tear is inevitable. सो दैट मीन्स दैट मेंटेनेंस इज बहुत एक ऐसी चीज है जो बहुत नेसेसरी है. पार्ट एंड पार्सल इज एन ईडियम जिसका मतलब होता है कि एक इनएविटेबल इट हैज बिकम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड वियर एंड टेयर यानी जिसमें हर एक चीज में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो थोड़ा डिग्रेड होता है टाइम से. सो वेयर एंड टेयर उसको बोलते हैं जब एक चीज की प्रॉपर्टीज थोड़ी डिग्रेड होती है. तो वेयर एंड टेयर इज इनएविटेबल एंड मेंटेनेंस जो है वो क्या है, पार्ट एंड पार्सल है. पार्ट एंड पार्सल बिकॉज वो होने ही वाला है. लेट मी टॉक अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन द क्लॉक इन माय डाइनिंग रूम वाज ब्रोकन एक्सीडेंटली. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसी कौन सी चीज थी which has broken, sorry. So we began like this. Let me talk about an incident when the clock in my dining room was broken accidentally. It was an ancient possession bought by my grandfather from an antique shop which was gigantic and jet black in color. So you can see that I've described the clock. और उससे क्या होता है कि adjectives use होते हैं description में. And हमारा जो vocab है वो एक अच्छे लेवल की vocabulary यहाँ पे मैंने यूज की है. ancient, antique, gigantic. तो ये सब क्या है आपके LR सेक्शन में आपको अच्छे मार्क्स फेच कराएगा. Furthermore, it was square in shape and had a unique pattern embossed on its periphery, which made it eye-catching. Eye-catching यानी जो आपका अटेंशन बहुत सीक करे उसको बोलते हैं आई कैचिंग. यहाँ पे फर्दर मोर यूज किया है विच इज अ कनेक्टिंग डिवाइस. सो गाइस, कनेक्टिंग डिवाइसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? क्योंकि वो हमको एक फ्लुएंसी देते हैं और हमारा कोहेरेंस भी मेंटेन करते हैं. लेट्स गो अहेड. This is the picture eye catching का. So I hope you guys will always remember कि eye catching का मतलब होता है कि जो भी चीज आपका बहुत ध्यान आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे आपका ध्यान को, उसको eye catching बोला जाता है. It's an idiom, so that will fetch you good marks in LR section. Second question is ये कब हुआ था? Our house needed renovation as it had been built several years ago. So for that we had to vacate it entirely. Vacate का मतलब होता है खाली करना. While shifting things, by mistake it fell on the floor and shattered to innumerable pieces. My jaw nearly dropped looking at it. Jaw nearly dropped at looking at it is an idiom. Jaw dropped in the sense आप surprised थे. So we've mentioned an incident कि हम हमारा घर शिफ्ट कर रहे थे, उसके दौरान सब चीजें इधर उधर कर रहे थे तो उसमें वो टूट गया. जो भी चीज आप डिस्क्राइब करते हो उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पहले डिस्क्राइब करो एंड फिर ये बताओ कि वो टूटा कैसे. Now comes the third question. Additionally, my heart sank. I wanted to get it repaired, but as it was a rare one, it was a daunting task to find a suitable watchsmith. After spending hours surfing the internet and inquiring my near and dear ones, I finally found a person with suitable skills. So इसमें थर्ड क्वेश्चन ऐसा था कि आपने क्या किया रिपेयर कराने के लिए. सो वी हैड डिस्क्राइब्ड अ फीलिंग यहाँ पे कि जब मैंने वो वॉच क्लॉक देखा कि इतना पीसेस में उसके वो हो गए तो माई हार्ट सैंक बेसिकली इज एन ईडियम, मतलब उदास हो गए. एडिशनली एक कनेक्टिंग डिवाइस है सो विच विल हेल्प यू इन द CC part, coherence part.
अब मैंने उसमें ऐसा लिखा है कि मुझे रिपेयर कराना था, बट इट वाज अ डॉन्टिंग टास्क. डॉन्टिंग टास्क इज अ गुड वोकैब, हाई बैंड वोकैब, जिसका मतलब होता है कुछ चीज जो बहुत टफ होती है. Suitable Watchsmith. Watchsmith is a person who repairs watches. So again, a good word for you guys to fetch good marks in vocab section. फिर near and dear ones is an idiom. So this means our relatives. And फिर मुझे एक इंसान मिला जो ये कर सकता था काम. So this is what I've tried to explain over here कि ये watch rare थी, so एक suitable watchsmith ढूंढना was a difficult टास्क फॉर मी, जिसके लिए मैंने इंटरनेट पे ढूंढा, अपने आसपास लोगों को पूछा, एंड देन आई फाइनली फाउंड अ suitable person. These are the explanations of idioms. I hope you use these idioms regularly so that you get used to them, and आपको high bands मिले LR section में. jaw dropping मतलब बहुत surprised होना, जो आप ये देख सकते हो पिक्चर में. और near and dear ones are your family members and your friends, जो आपके close relatives होते हैं, वो near and dear ones में आते हैं. Then comes the last part. I spoke to him and he reassured me that he will fix it, even though it required special parts and procedures. Hearing this, I was ecstatic. मतलब उसने मुझे ऐसा बोला कि ये थोड़ा difficult task है, but मैं करूँगा. एंड इवन दो यहाँ पे कनेक्टिंग डिवाइस है, आप वेरिएशंस देख सकते हो. पहले हमने फर्दर मोर यूज किया, वाइल यूज किया, अब हम इवन दो यूज कर रहे हैं. सो हमेशा कनेक्टिंग डिवाइसेस में भी वेरिएशन रखिए. देन यहाँ पे एक्सटैटिक एक नया वर्ड है, एक्सटैटिक यानी बहुत खुश होना. सो रिमेंबर दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स फॉर हाई बैंड वोकैब. Lastly, I got a call from him after 15 days that he had finally done the job and it was as good as before. I was on cloud 9 and thanked him profusely for the same. So ये आता है feeling वाला part कि जब उसने मुझे फाइनली कॉल किया कि आपका क्लॉक बन गया है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी. अब वेरी हैप्पी को हम ईडियम से डिस्क्राइब करेंगे. ऑलरेडी हम एक्सटैटिक यूज कर चुके थे, जो एक अच्छा वो कैप था. Now we are using an idiom over here. So on cloud 9 is an idiom which you can use for happiness. So remember guys, such idioms are very very handy. Happiness हम काफी जगह एक्सप्रेस करते हैं, तो आप on cloud 9 याद रखिए. Last है conclusion. To sum up, I'd like to say that we must handle precious things like this with caution to prevent such mishaps. अब जैसे हमेशा हम कंक्लूड करते हैं, तो हमने कंक्लूजन दे दिया कि ऐसे मिसहैप्स एक अच्छा वर्ड है. एक्सीडेंट होता है उसका मीनिंग. एक्सीडेंट इज समथिंग दैट वी रूटीनली यूज, तो हमने एक लेस कॉमन वर्ड यूज किया, मिसहैप्स. So mishaps is something which means accident. So हम ऐसे accidents कैसे prevent कर सकते हैं? So we have to be cautious. Cautious यानी ध्यान रखना. So caution और cautious ये दो नए words आपके लिए हैं. So remember these words. So you get better bands in vocab. That's all for today. Thank you for watching this video. If you like the content, please even refer to your friends and subscribe to this channel. And if you're looking for one-on-one writing and speaking evaluations, please contact me on the number which is provided in the description box. Thank you once again, and we'll be uploading more content like this.